Hello there, everybody. Welcome back to the channel. Today, we're going to be watching and reacting to a Career 24/7 video on the whole Trump and Musk debacle that happened on Twitter on June 5th, 2025. Now, I was going to go ahead and make a video on this topic, but unfortunately, yesterday was kind of a rough day for me, so I didn't get around to it when it was happening live. And in the process of getting up and getting ready to make this today, well, lo and behold, PD here released a video on it. So why not react to this, give my own thoughts on the whole thing happening, and we'll see how it affects, my majority Indian audience as well, because it'd be interesting to get that perspective on this. Now, I will go ahead and say, leading up to all this, Elon Musk has been on he's been very vocal on calling out the bill increasing the deficit of the U.S. For several days he was going on and on and on about the bill needs to be redone. The bill is increasing the debt. He was posting memes about killing the bill, and he was reposting other people's memes as well on it until finally, it all came to a hurdle yesterday. So we'll go ahead and see what he has to say here. If you just want to listen to the Career 24/7 video, because I'm going to probably stop a lot in this video and talk, go to the link in the description down below and go to the video directly. But if you do want my commentary on it, please stick around. We'll go ahead and talk on it because I do have a lot to say. I do have quite a bit to say on the topic. But let's go ahead and start the video, yeah? नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। Welcome, welcome. डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क दोनों के बीच में सडनली सिविल वॉर हो चुकी है। इसको एक सिविल वॉर ही आप कहोगे। ये दोनों भाइयों की तरह कुछ ही हफ्तों पहले एक दूसरे की तारीफ कर रहे थे। इलॉन मस्क का बेटा Yeah, they have had a pretty interesting little relationship for the past, I would say, nearly a year with the pretty close ties. He became friends with Trump's family. Trump, their families basically got pretty close in this whole time period. And again, this is, I said it on the Discord server, this is all just an argument between friends, and things will probably be okay. Now, there's already conspiracy theories going on out there saying, oh, they did this to manipulate the markets, yada, yada, yada. That's not true. That it's just not the case. Elon Musk is just very vocal very vocal and very passionate when it comes to things he wants to talk about, right? And in particular, he was going on and on and on about this bill and cutting this bill and the wastefulness of this bill. So they're going to talk today. They've already announced that they're going to have a call today to discuss things and work things out. It's interesting. डोनाल्ड ट्रंप के आसपास खेला करता था। एवरीथिंग वाज गोइंग वेल। सडनली हम देखते हैं दोनों के बीच के रिलेशंस खराब होने शुरू होते हैं, और अब स्थिति इतनी खराब हो गई है कि दोनों पूरी दुनिया के सामने एक दूसरे पर बड़े आरोप लगा रहे हैं। और इलॉन मस्क ने तो ये तक कह दिया, अगर मैं ना होता तो डोनाल्ड ट्रंप कभी भी प्रेसिडेंट ना बनता। Now, yeah, if I agree with this. Without Elon Musk, Donald Trump would not be president. Now, the reason I agree with this is because if Elon Musk did not buy Twitter, there's no way that Donald Trump would have been president. Elon Musk's influence over Twitter and and the whole space of the internet around Twitter definitely pushed in favor of Donald Trump. I don't think the average person would have voted for him without Twitter, because the narrative is painted so wildly different in comparison to when he bought Twitter compared to before he bought Twitter, where things were more biased, more left leaning, more prone to being censor filled. With Twitter current of today, things are a lot less censored. They're not fully uncensored, but they're a lot less censored. And I think that led to Trump becoming president. उसके बाद से देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने भी काफी कुछ बोला है इलॉन मस्क को। और मैंने एक बात नोट करी है,
सडनली इलॉन मस्क की जो मेजर कंपनीज हैं इनके शेयर गिरने शुरू हो गए हैं और जब Yeah, मैं the shares did drop a lot yesterday, 14%. That's pretty funny. Yeah, I mean it's the market does react to what Elon Musk says. He's very powerful in that regards. His words can shift the market greatly. Tesla's dropped, Bitcoin dropped. It's very interesting to see. Now I'm not a financial advisor or anything like that, but hey, buy the dip, right? मैं कहता हूं गिरने शुरू हो गए हैं, आई मीन दे आर क्रैशिंग। आप अगर टेस्ला का शेयर I don't know if देखो it's a एक दिन crash. में, क्योंकि कल रात को इलॉन मस्क और ट्रम्प लड़े हैं, उसी टाइम टेस्ला का शेयर ऑलमोस्ट 14.5% गिर गया सिर्फ एक दिन में। और इस बात की रिपोर्ट्स वैसे पिछले 4-5 दिन से आई रही थी। I don't know if I would constitute that as a crash. I think it's a small little dip. We'll see though. We'll see though. We'll see how it goes today. Funnily enough, though, I did sell my stock on the fourth, my Tesla stock on the fourth. So that's pretty funny. I got out of there before the drop too deep, but I'll probably reinvest into Tesla. I'll wait and see how things go this morning, and I might buy some more again. गिर गया सिर्फ एक दिन में। और इस बात की रिपोर्ट्स वैसे पिछले 4-5 दिन से आई रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क पॉलिसीज के इशू को लेकर आपस में एग्री कर नहीं रहे और दोनों का ब्रेकअप कभी भी हो ही जाएगा। पिछले 5 दिन में भी आप देखो तो टेस्ला के शेयर 20% गिरे हैं और इससे इलॉन मस्क की जो नेटवर्थ है ये $34 बिलियन कम हो गई है और अभी ये शुरुआत है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो His net worth dropped $34 billion overnight amid feud with Donald Trump. That's funny. That's funny. It's all wrapped in stocks, so it's not like any of that money is liquid, or his value really wasn't what was wrapped up in. It's always liquid. It's ups and downs, man. It's just the way life is. भाषा यूज करी है अभी इलॉन मस्क के बारे में, मैं भी आपको सब बताऊंगा। उससे साफ साफ लग रहा है ट्रंप भारी नुकसान पहुंचाने वाले हैं इलॉन मस्क को और कोई बड़ी बात नहीं है। ट्रंप के इस कार्यकाल में इलॉन मस्क की नेटवर्थ जो लोग कह रहे थे अब तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि दोनों के रिलेशन अगर अच्छे रहते तो इनकी नेटवर्थ बढ़ती, बट सिंस अब डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क एनिमीज बन चुके हैं, दोनों एक दूसरे को टारगेट कर रहे हैं। अब आप देखोगे ट्रंप They haven't became enemies. Again, this is just a simple argument. They're not enemies. की ऐसी पॉलिसीज आएंगी जो इलॉन मस्क की कंपनीज जैसे कि स्पेस एक्स, टेस्ला, इनको चोट पहुंचाने वाली है और इलॉन मस्क का नेटवर्थ बहुत तेजी से गिरेगा। नाउ ऑब्वियसली आपका एक सवाल ही आएगा, मगर सडनली ऐसा हो क्या गया कि डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क जो एक दूसरे को आई लव यू कहा करते थे, सडनली ये एनिमीज बन चुके हैं। आई मीन They're not कुछ ही enemies. महीनों पहले मुझे अच्छे से याद है इलॉन मस्क You can have disagreements among friends. Come on, come on. They're not enemies. ने ये ट्वीट करी थी और डोनाल्ड ट्रंप का जो सुपुत्र है डोनाल्ड ट्रंप जूनियर वो काफी हंस रहा ये देखकर। इलॉन मस्क ने ये कहा था कि मैं डोनाल्ड ट्रंप से उतना ही प्यार करता हूं जितना एक स्ट्रेट आदमी कर सकता है एक और आदमी को। मतलब लिटरली ये कह रहे हैं कि भाइयों वाला प्यार करता हूं डोनाल्ड ट्रंप को, आई रियली लव द गाय। अचानक से क्या हो गया कि दोनों के रिलेशंस खराब हो गए। द रूट कॉज ऑफ ऑल इवल पैसा। अब यहाँ पे Money, आप कहोगे दोनों money, money, बिलियनियर money. The root cause of all evil is money. Um, yeah, maybe. हैं। अभी भी पैसा इतना बड़ा एक इशू आ गया कि दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए। वेल हाँ, इलॉन मस्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसी पॉलिसीज लेकर आए जिससे इनकी जो कंपनियां हैं टेस्ला, स्पेसएक्स, इनको फायदा हो। मगर ट्रंप का जो बिल है बिग ब्यूटीफुल बिल जिससे भारत को भी नुकसान होगा, इसमें ऐसे भी प्रावधान हैं जिससे इलॉन मस्क को भी नुकसान होना। Elon Musk has already came out and said that this is not the case. This is not why he's against the big beautiful bill. The electric vehicle mandate being cut. Elon Musk has said in 2021 that he wants that thing cut. This is not a real reason. The reason Elon Musk is so against the big beautiful bill, this big beautiful bill, is because it increases the debt of the U.S. debt. It increases the deficit by quite a large margin, and he feels slighted that all his work for Doge is being undermined by this deficit increase. था और इन्होंने साफ साफ कह दिया मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। डोनाल्ड ट्रंप की जो अब नीतियां आने वाली हैं मैं इसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करने वाला। अब यहाँ पे आपका सवाल आएगा कि ये ट्रंप का वन बिग ब्यूटीफुल बिल है क्या? इसके बारे में आपको याद होगा मैं कई हफ्तों पहले वीडियो बना चुका हूं।
डोनाल्ड ट्रंप एक बड़ा बिल लाने वाले हैं जो अभी के लिए ड्राफ्ट हो चुका है, कमेटी रिव्यू में जा चुका है, इस पर हाउस वोट हो चुका है। अब इनकी जो राज्यसभा है, सेनेट, वहां पे डिबेट होगा, वोटिंग होगी और बहुत ही जल्द विद इन 2 स्टेप्स ये बिल एक एक्ट बन जाएगा। ये एक ऐसा बिल है जिसमें बहुत सारी बातें लिखी है। इसमें पहली बात तो डोनाल्ड ट्रंप टैक्स कट करना चाहते हैं अमेरिकन पब्लिक के। ये किसको अच्छा नहीं लगेगा? भारत में भी लोगों के टैक्स जब कट होते हैं सब लोग खुश हो जाते हैं। अभी रिसेंटली आपको पता होगा जो बजट में जो टैक्स की सीलिंग है थोड़ी जब बढ़ा दी गई, सब लोग खुश हो गए। तो ट्रंप यहां पर कह रहे हैं ये अमेरिकन का टैक्स कट करना चाहते हैं। वी आर प्रिपेयरिंग योर टैक्स कट्स। और नीचे यहां पे ट्रंप की फोटो। Yeah, they would do tax cuts for middle and lower class people, and it also includes things like no taxes on some particular sectors. ये बाय द वे व्हाइट हाउस की ऑफिशियल वेबसाइट में आपको दिखा रहा हूं। ट्रंप मार्केटिंग जीनियस है। ये आप देखिए किस तरीके से कोई मूवी पोस्टर की तरह यहाँ पे इमेज लगा रखी है। ये सरकारी वेबसाइट है। ये यहाँ That's पे just the लिखा है way. That's just this is just the way that Trump is with everything that he does. Movie poster. Yeah, I guess you could say that. वन बिग ब्यूटीफुल बिल। और नीचे ये कह रहे हैं अमेरिकन इंडस्ट्री इसको बैक कर रही है। और डोनाल्ड ट्रंप ने ये पूरा बिल अपने वोटर बेस को ध्यान में रख के बनाया है। देखो यूएसए में बहुत सारे लोग हैं जो रेस्टोरेंट्स में काम करते हैं एज वेटर्स। वो लोग टिप पर काफी हद तक डिपेंड करते हैं। कोई खाना खाने वहां पर गया, वो टिप छोड़ के गया। यूएसए में टिप कल्चर बहुत बड़ा है। हमारे I hate tips. I don't tip. I don't do if something requires me or is expected like socially for me to tip, I'm just not going to go and do it. यहाँ इंडिया में 1,000 रुपए का खाना खा लिया, टिप अगर कोई दी ही नहीं तब भी लोग चले जाते हैं। मगर यूएसए में आपको एक साइजेबल अमाउंट की टिप देनी होती है। कई जगह तो 15-20% के आसपास भी टिप का कल्चर है। तो उस टिप पर भी यूएस गवर्नमेंट टैक्स लेती थी। अब यहाँ पे ट्रंप कह रहे हैं टिप्स विल ऑल्सो बी टैक्स फ्री। और ये चेक करिए कि आप ओवर टाइम काम करते हैं, आपको अगर टिप्स मिलती है तो कितना पैसा आप बचाएंगे। इसका पूरा एक कैलकुलेटर यहाँ पे दे रखा है जिससे कई लोग कैलकुलेट कर पाएंगे कि कितना पैसा उनका बचेगा एवरी सिंगल मंथ। और ऑब्वियस सी बात है, आप खुद सोच कर देखिए, अगर ट्रंप अपने लोगों का टैक्स काटेंगे, मतलब उनसे कम टैक्स वसूलेंगे, तो कहीं ना कहीं से तो यूएस गवर्नमेंट को पैसा चाहिए ना। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप यूएसए का जो डिफेंस बजट है वो भी बढ़ा रहे हैं, कई और खर्चे हैं वो भी बढ़ा रहे हैं। तो ये पैसा आएगा कहां से? जो Yeah, I mean that golden dome isn't going to come from nowhere, right? It's going to cost a lot of money. फंड करेगा इनके इन सब खर्चों को? तो यहाँ पे ट्रंप मान के चल रहे हैं जो ये टैरिफ वगैरह लगा रहे हैं दुनिया भर के देशों पर, उससे जो डील्स होंगी उससे यूएसए को इतना फायदा होगा कि आराम से ये टैक्स सब्सिडीज भी दे पाएंगे अपने लोगों को। Now, I will say the US did run off of tariffs and consumption tax before the early 1900s. The income tax wasn't implemented into the US until after the Civil War. And the reason it was implemented was to pay off debt accrued during the Civil War. But before the Civil War, we didn't have income tax. I think income tax is 100% absolutely a theft, and I think an increase in consumption tax is probably the real way to grow. Utilizing smart tariffs and consumption tax instead of this huge guillotine above everyone's income, I think is the correct way to go. को। और साथ ही साथ आप सबको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप रेमिटेंस टैक्स भी लाने वाले हैं। इस पर मैंने पूरी वीडियो बनाई थी कि Yeah, जो yeah. Okay, the remittance tax. Yeah, I think Donald Trump's going to be implementing. It was like 5 to 10% of any money that leaves the U.S. towards, like for a foreign nation. So in this case, if an Indian family member was sending money from the USA back to India, it would be taxed like 5%, which wasn't the case before. पैसा इंडियंस यूएस में जाकर कमाते हैं, ये मैं लीगल माइग्रेंट्स की बात कर रहा हूं जो वहां पर आईटी कंपनीज या फिर किसी और कंपनी में जाकर पैसा कमाते हैं और फिर वापस वो पैसा भेजते हैं भारत में, उस पर 5% टैक्स लगाने की Yeah, बात की जा 5%. रही है। नाउ ये टैक्स कई जगह लिखा है कि जी 3.5% हो सकता है, कई लोग कह रहे हैं 3% भी कर सकते हैं क्योंकि अभी भी डिबेट चल रहा है इस बिल को लेकर। बट आई वुडंट बी सरप्राइज्ड कि सीधा 5% टैक्स पर ये बिल लेकर आ जाए। बेसिकली जो इंडियंस, ना सिर्फ इंडियंस, एक्चुअली ये बिल ऐसा नहीं है कि इंडियंस को टारगेट करता है। मैं इंडियंस इसलिए कह रहा हूं क्योंकि
आई एम एन इंडियन माई सेल्फ, और बहुत सारे Yeah, it's targeted towards everyone, not specifically Indians, like you said. इंडियंस ही काम करते हैं यूएसए में। बट कोई भी फॉरेन नेशनल यूएसए में काम करने के लिए जाएगा, अपने घर में अगर उसको पैसा भेजना है ना, अगर 1 लाख रुपए भेजने हैं तो उस पर 5,000 रुपए उसको पे करने होंगे यूएस गवर्नमेंट को। तो बेसिकली जो ये टैक्स कट्स अमेरिकन पब्लिक को मिलने वाले हैं ना, ये कुछ हद तक इंडियंस के पैसों से पूरे किए जाएंगे। और ना सिर्फ ये, डोनाल्ड ट्रंप ने ना और जगह देखा कि कहाँ का फालतू का खर्चा हो रहा है जो ये कट कर सकते हैं। एक जगह डोनाल्ड ट्रंप को दिखा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। मेरा जो वोटर Again, I'm just going to say this. Elon Musk is fine with this. If he's saying that this is why Elon Musk is angry, it's not. I mean, here he is saying keep the EV solar incentive cuts in the bill, also cut all crazy spending increases in the big ugly bill so that Americans don't go bankrupt. And also, if we go down on his X account, there should be somewhere here where he specifically calls out. Well, here's a community note right here, actually. Perfect. In 2021, Elon Musk supported eliminating EV tax credit and gas oil subsidies, calling Biden's EV spending bill unnecessary. He made similar comment in June 2025 about the big, beautiful bill. Let's see if this goes to the comment specifically. Whatever, keep the EV solar incentives, but ditch the mountain of disgusting pork in the bill. In the entire history of civilization, there was never been legislation that's both big and beautiful. Everyone knows it. Either you get a big and ugly bill or a slim and beautiful bill. Slim and beautiful is the way to go. Jesus. Zach down here. Ain't nobody want a fat retarded bill. That's funny. That's funny. You know, here he is in May 29th, where he says there's no change to tax incentives for oil and gas, just EV and solar. So he knew about that ahead of time as well. Okay, let's get back to the video here. बेस है, उनको इलेक्ट्रिक व्हीकल से मतलब है, उनको मतलब ही नहीं है। ट्रम्प के वोटर बेस को क्लाइमेट चेंज से कोई मतलब नहीं है। वो तो कहते हैं कि जी कोई चीज होती नहीं, वैसी बात भी वहां पे बोल लेते हैं। तो ट्रम्प ने यहाँ पर यह भी सोचा कि मैं फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को सब्सिडाइज क्यों कर रहा हूँ, इनको हेल्प क्यों कर रहा हूँ, यहाँ पर भी कटौती करता हूँ। और Again, I will just preface this. This is not the reason why Elon Musk doesn't like the bill. Elon Musk has been a very, very staunch person that says, for a very long time, that said the debt ceiling, the U.S. national debt has just been way too high, and he hates the fact that this bill will increase the deficit by quite a lot. इसी बात को लेकर ट्रंप और इलॉन मस्क भिड़ गए, क्योंकि अंत में बात आती है पैसे की, इंटरेस्ट की। इलॉन मस्क डोनाल्ड ट्रंप के बड़ी तब तक ही थे जब तक डोनाल्ड ट्रंप हेल्प कर रहे थे इलॉन मस्क की। जैसे ही इलॉन मस्क को दिखा कि ये आदमी कुछ ऐसा करने वाला है जिससे मेरी मेन कंपनी टेस्ला को भारी नुकसान होगा, इलॉन This is not the case. This is not the case. मस्क सडनली बन गए एंटी डोनाल्ड ट्रंप। नाउ ये आपके सामने मैं एक वीडियो प्ले करूंगा सबटाइटल्स। This is funny. This is the video that we were just looking at with the community notes. I wonder if the community notes was on here at the time of him recording this video. इसके साथ इसमें आप समझ पाओगे कि मेन इशू क्या है डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क के बीच में। ये जो वीडियो है ये देखिए, कुछ सेकंड्स की है बस। But I'm very disappointed because Elon knew the inner workings of this bill better than almost anybody sitting here, better than you people. He knew everything about it. He had no problem with it. All of a sudden he had a problem. And he only developed the problem when he found out that we're going to have to cut the EV mandate, because that's billions and billions of dollars. And it really is unfair. We want to have cars of all types, electric. So, in this own statement here, false, the bill was never shown to me once and was passed in the dead of night. So fast, Congress, almost no one in Congress could even read it. The bill is like 1,100 pages big. It's a huge read. It's a massive bill. We want to have electric, but we want to have gasoline, combustion. We want to have different. We want to have hybrids. We want to have all. We want to be able to sell everything. And when that was cut, and Congress wanted to cut it, Congress wanted to cut it. Now, अब यहाँ पर देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने खुलकर ये बात कही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैंडेट के अंडर ना यूएस गवर्नमेंट ने लिटरली फोर्स किया सबको कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स परचेज करो। ये ऑब्वियसली इलॉन मस्क के लिए काफ़ी बेनिफिशियल था। नाउ सिंस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैंडेट खत्म हो रहा है, ट्रंप कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही क्यों, हर टाइप की गाड़ियां चाहिए हमको।
क्लियरली जैसे मैंने आपको बोला, इन्होंने पेरिस क्लाइमेट जो एग्रीमेंट है उससे भी यूएसए को पुल आउट कर लिया है। इनको क्लाइमेट चेंज की कोई परवाह नहीं है। तो इलॉन मस्क सडनली यहाँ पर रियलाइज कर रहे हैं इनके हिसाब से। अगेन ये ट्रम्प की एक्यूजेशन है कि ट्रम्प ने देखा कि अरे Oh, good, good. He says this is Trump accusation because it's been community noted that he isn't against this. Musk said, I think we should get rid of all credits. When asked Thursday by a reporter on Capitol Hill if he supports getting rid of electric vehicle tax credit, Politico reported. Musk made a similar statement in July, writing, take away the subsidies. It will only help Tesla. Eliminating tax credit could potentially hurt other EV manufacturers more than it would help Tesla. Or more than it would Tesla, the largest global EV producer, and lead to decreased competition for the company, causing potential dip in demand, and could prompt the other EV manufacturers to reduce production, according to experts. Trump campaigned on ending Biden's EV mandate, though he did not specifically target the tax credits. His transition team is reportedly planning on eliminating it. So this was, his statement all along. He's fine. He's fine. So this is December 5th, 2024, by the way. Musk calls for ending electric vehicle tax credit, which could help Tesla. He's fine with this cut being in the bill, and he has been. It's a stance he's had for a very, very long time. So this is just Trump deflecting from the real issue, which is the deficit increase in the bill. ये मेरी जो टेस्ला कंपनी है, ट्रम्प तो डुबा देंगे इसको। अचानक से इलॉन मस्क ने बंदूकें तान दी ट्रम्प पर, और इलॉन मस्क इसके रिस्पांस में खुद को डिफेंड करते हुए कहते हैं कि फॉल्स, ये बिल कभी मुझको दिखाया ही नहीं गया था एक बार भी, और ये बिल बिल्कुल रात को पास कर दिया गया ताकि कोई भी कांग्रेस में इसको लेकर कुछ डिबेट ना हो पाए, कोई इसको रीड ना कर पाए ना। देखो यूएस पार्लियामेंट में इसको लेकर डिस्कशंस तो हो रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि सीधा इसको झटके से पास कर दिया गया, बट दोनों एक दूसरे पर गुस्सा हैं, दोनों फील कर रहे हैं। वेल एक्चुअली एक पार्टी नहीं, दोनों तो नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के पर्सपेक्टिव से आप अगर सोचो ना, उन्हें अपने वोटर बेस को खुश करना है। दोनों की प्रायोरिटीज अलग अलग है। ट्रंप की प्रायोरिटी ये नहीं है कि इलॉन मस्क एक ट्रिलियनियर बने या ना बने, ट्रंप को अपनी कुर्सी बचानी है। ट्रंप को यूएस वोटर बेस को खुश करना है, अपने वोटर बेस को खुश करना है। इलॉन मस्क को अपनी जेब बचानी है। तो कहीं ना कहीं जो इंटरेस्ट थे ये कोलाइड करना शुरू कर गए, और उसके बाद देखिए इलॉन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप के बारे में ऐसी ऐसी बातें बताई हैं कि पूरी दुनिया शॉक्ड है। और बाय द वे इलॉन मस्क I support this 100%, by the way. I'm actually part of a third party in the U.S. There are many different political parties in the U.S. It's just that they don't have as much footing as the main, Democrat, Republican parties. But I am part of a third party in the USA. I'm part of the Forward Party. So I 100% support Elon Musk, looking into this more independent parties. 100%. के जो यूजर्स है, ट्विटर के जो यूजर्स हैं, उनसे ये भी पूछ रहे हैं मैं अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टी बना लूं, क्योंकि he wasn't. This is not in reference to forming his own political party. It's just that he wants a new political party in America, which there are many already. इलॉन मस्क देखिए प्रेसिडेंट तो बन नहीं सकते यूएस के। अगर आप यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि अगले इलेक्शन में इलॉन मस्क चुनौती देंगे ट्रंप को, ये पॉसिबल है नहीं, क्योंकि इलॉन मस्क का जन्म यूएसए में हुआ नहीं था। इलॉन मस्क पैदा हुए थे साउथ अफ्रीका में। तो ये अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं, मगर ये यूएसए के प्रेसिडेंट नहीं बन पाएंगे। कहीं ना कहीं इनको एक पपेट प्रेसिडेंट टाइप का जुगाड़ करना होगा। That's not his goal. That even wasn't what the tweet was referring to, him forming his own political party. He's just saying that he's tired of both political parties. And if you go through his Twitter timeline, he calls out a lot of Republicans just in the same way he called out a lot of Democrats on pushing this bill. He's upset that this bill will increase the US deficit. तो ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, is it time to create a new political party जो 80% अमेरिका? There already is. There are several. I'm part of one called the Forward Party. There already is several different parties in the US. अमेरिकन्स को सपोर्ट करे, उनके हिसाब से चले। तो इसको लेकर आई डोंट नो, मैं यहाँ पे यस करूँ नो, एक बार दिखाने के लिए आपको कर रहा हूँ कि इधर लोगों ने वोट क्या किया है। ऑब्वियसली ट्विटर है तो 80% ने यस ही किया होगा, नो भी किया होगा। तो इलॉन मस्क ने अंदर से कुछ सेटिंग करके दिखा दिया होगा कि 80% यस कर रहे हैं। सो अगेन दिस इज द स्टेट ऑफ अफेयर्स। सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब है, और इलॉन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप का जो पास्ट है वो भी एक्सपोज करना शुरू कर दिया है। इधर आप देख पाओगे इलॉन मस्क ने ये तक कह दिया कि जो
What is this? Oh, is this him? Yeah, so this is Elon Musk supporting the impeachment of Donald Trump to have JD Vance become president. And he also dropped this as well. I don't know why I hate this Ian Miles Chong guy. He's such a grifter, absolute just trash grifter. A lot of the things he says is false. But Elon Musk is always retweeting him for whatever reason, replying to him. But yeah, president versus Elon, who wins? My money's on Elon. Trump should be impeached, and JD Vance should be replace him. Elon Musk says the yes to this, and Ian Miles Chong is referring to Donald Trump being in the Epstein files. So time to drop a real big bomb. Donald Trump is in the Epstein files. Is the real reason they have not made public. Mark this post for the future. The truth will come out. I will already go ahead and say this. It has already been known that Donald Trump is in the Epstein files. So the Epstein files were actually leaked several years ago. And the recent partial release from the government earlier this year verifies that initial leak that happened several years ago. Everyone knows that Donald Trump was on the Epstein files. There are many major political figures in the U.S. and many celebrities in the U.S. that are in the Epstein files. Political figures from the 90s, from the late 80s, the 90s, and the early 2000s. Same with celebrities. There are so many on that list. Other notable ones are like, Bill Clinton, for example, is a big other political figure that is on that list. So this has already been known. It's not that big of a bomb to drop. It's already known that Trump is in those Epstein files. एप्स्टीन फाइल्स हैं, उनमें भी ट्रम्प का नाम है। जेफरी एप्स्टीन, आपको पता होगा, एक ऐसा आदमी था जिसने बहुत सारे कुकर्म किए थे और कई जो फेमस लोग हैं, बताया जाता है कि एप्स्टीन के काफ़ी करीब थे। बताया जाता है डोनाल्ड ट्रम्प भी काफ़ी बार एप्स्टीन के साथ घुमा करता था। तो अगेन यहाँ पर भी इलॉन मस्क ने खुलकर कह दिया है कि इसी वजह से एप्स्टीन फाइल्स पब्लिक अभी तक हुई नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का भी उसमें नाम है। और तब से लेकर मैंने अब तक देखा है, डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल चुप है जब इलॉन मस्क ने ये एक बात बोल दी। और कई जो सपोर्टर है इलॉन मस्क के, वो ये भी कह रहे हैं ट्रंप को इम्पीच किया जाना चाहिए और जेडी वैंस को बनाना चाहिए द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और JD Vance would be a better president. इलॉन मस्क कह रहे हैं यस। सो जेडी वैंस के साथ अभी भी इनकी काफी अच्छी बनती है और आई वुडंट बी सरप्राइज कि यूएसए में ये लोग एक पॉलिटिकल कू करने की कोशिश करें, जहां पे डोनाल्ड ट्रंप को ये लोग बिल्कुल हटा दें और सडनली जेडी वैंस बैक्ड बाय इलॉन मस्क ये बन जाएं द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो आने वाले समय में देखिए बहुत सी चीजें होंगी। इस सब का इम्पैक्ट भारत पे क्या होने वाला है। अगर मान लीजिए जो ये बिग ब्यूटीफुल बिल है डोनाल्ड ट्रंप का, जो इंडिया को भी नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है, अगर ये पास हो जाता है तो ऑब्वियसली इससे भारत को भी नुकसान होगा। अगर ये पास नहीं होता, दिस इज ग्रेट फॉर इंडियंस। अगर ट्रंप रुक जाते हैं, ट्रंप कहते हैं कि इस बिल को अभी के लिए पॉज कर देता हूं, दैट इज अ ग्रेट विन फॉर इंडिया। उसके अलावा देखिए अब सडनली ना आप देखोगे इलॉन मस्क की जो एंट्री होनी थी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, वो एंट्री जो पहले ग्रैंड तरीके से हो रही थी ना, अब वापस थोड़ा बहुत मामला थम जाएगा, क्योंकि इलॉन मस्क के पीछे सडनली अब डोनाल्ड ट्रंप नहीं खड़े हैं। उल्टा डोनाल्ड ट्रंप काफी बार बाधा डालेंगे इलॉन मस्क के सामने कि तुम एक्सपैंड करना चाहते हो, बाकी कंट्रीज में मैन्युफैक्चर करना चाहते हो, ये लो और टैक्सेस। तो अगेन थिंग्स आर गोइंग टू चेंज अ लॉट। मुझे पता नहीं कि ये जो स्टारलिंक इंडिया में इंटरनेट लॉन्च करना चाहता है, ये भी ये लोग आसानी से कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आने वाला समय बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। कुछ अपडेट्स आती हैं तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। देखिए मेरा मानना है PD10 everyone. PD10. Again, PD10. PD10. Let's go back to Elon Musk's Twitter account. So we can kind of go through here. He left out where he mentioned several times Elon Musk tweeted and referenced and retweeted and reposted, whatever you want to call it, where he was calling out old posts from Donald Trump. Here's one in particular right here, where before Donald Trump was president, Donald Trump, reprimanded and called out Republicans and Democrats on increasing the deficit in their bills, right? So we can go through here. We need a balanced budget amendment because Congress has no fiscal discipline. Debt ceiling, sometimes no deal is better than a bad deal. The more you learn about the debt deal, the worse it gets. The House failure to pass the balanced budget amendment was another unforced error by the GOP. Very disappointing.
I cannot believe the Republicans are extending the debt ceiling. I am a Republican and I am embarrassed. So here is Elon Musk saying, where's this guy today? This is the reason. The reason why he is so against this bill is because it increases the debt, it increases the deficit of the country. And I guess Elon Musk thought, this old version of Trump was still the Trump of today, where they agreed and aligned on that. So it is a bit crazy, right? It is a bit crazy. Here he is reposting. I've been very consistent, just stating facts here. Elon Musk in 2021 on the federal budget, you can't just spend $3 trillion more than you earn every year and don't expect something bad to happen. Something's got to give. So again, he is here saying, this is the reason. This is the reason why he is so against the bill, and we went over this already. He's been for these electrical vehicle tax credits being cut. That's perfectly fine in his eye. Here's Donald Trump saying, Elon was wearing thin. I asked him to leave. I took away his EV mandate that forced everyone to buy electric cars that nobody else wanted, that he knew for months I was going to do, and he just went crazy. But again, we saw that he has said, and he's perfectly fine with the EV mandates being cut. Such an obvious lie, so sad here by Elon Musk. Again, man, this is the thing. This is the thing. Look at 1 million likes, by the way. Look at that, 169 million views. The reason he's upset, I will keep continuously saying it, is because of the deficit increase. Now, also on another note here, J.D. Vance has come out and said, President Trump has done more than any person in my lifetime to earn the trust of movement he leads. I'm proud to stand beside him. So, he was memeing here with Theo Vaughn about, a slow news day, nothing to talk about. Then he came out in support of Donald Trump and all this. And of course, he's the vice president. He's going to be doing that, right? But I just wanted to make note of this because, of this, what PD said here about, this third party and impeachment of Trump, right? And again, there are other political parties in the U.S. There are several notable ones, and I am part of a third political party. So I don't know. It's silly to me that I mean, Elon Musk doesn't know about any other political parties, but we'll see. I'm just curious now to see if all the people that called Elon Musk a Nazi for his salute thing he did at Trump's inauguration party, if they'll apologize to him, because a lot of these same people that were calling him a Nazi are trying to get his attention to join their cause, their side now. So we'll see how that goes. Let's go back to this video here, PD10 everyone, and see what some of the comments have to say about this topic, yeah? Next 4 years is going to be interesting. A friend became an enemy is the worst thing that can happen in life. America used to set trends. One statement of the whole world would follow. Now it makes statements, and the world checks if the stand-up comedy special from global leader to global meme. What a journey. That is why it is said that businessmen should focus only on. This is why it's said that businessmen should focus only on their business. Politics is not their job. Ultimately, businessmen suffer losses. Elon Musk doesn't care. Karma backflip to Trump. Richest person versus richest powerful person. Narcissists may align for a time, but friendship demands a humility they cannot afford. Two narcissists can never be together for long. Government India should make it mandatory for online companies collecting payment online to strictly collect these fees in an Indian public bank and then transfer it to their respective countries after paying a similar 5% tax. We got Elon versus Trump before GTA 6. This is why businessmen should always stay neutral. Exactly what happened in the Netflix series House of Cards. President Frank Underwood, played by Kevin Spacey, versus energy billionaire Raymond Tusk, rhymes with Musk.
Even if Elon Musk creates a political party, his true mentality is already out of his main focus, would be his net worth, not happiness for American people. Again, he's not making a political party. That was just a simple statement in rebuttal to him being so upset at both Democrats and Republicans. And there are already different political parties in the U.S. Everything that is happening in America after Trump is absolutely not a cinema. It's an absolute web series. Absolute cinema. Wise man told earlier, next 4 years is going to be interesting. Now this is cinema. USA is full of comedy. Why is Modi Ji so happy in the thumbnail? Wise minister will never allow ego to take part in politics. USA is just like Indian police. Meaning this is what happens in friendship? Yeah, just a slight argument between them. And again, there's going to be a call between them later today at the time of the video of the release, so we'll see how that goes. U.S. thinks for their citizen. WTF, Elon Musk and Trump getting divorced before GTA 6. There's no such friend whom I have not trusted. Okay. That's funny. Let's look at some of the new comments here, yeah? Let's look at some of these new comments. Trump is greedy and evil. India TV serials now finally have a competitor in the market. Cinema. Bromance is over. Trump seems crazy to me. Trump is a joker of USA. He thinks he's king and world as slaves. Trump has come for Trump. He will now know how it feels to deal with a mad person. Divorce case filed. Elon Musk has withheld the last $100 million of his $300 million donation to Republicans. JD Vance also likes bastards. I became Sahab. How did you tease me after becoming Sahab? Look at my suit. What does that mean? This is good for Indian or India, maybe? Interesting. All right, well, actually, hold on. What was that? What was that thing that I just saw? I just saw something I wanted to read as I scrolled up. Oh, no. I literally just saw something I wanted to read as I scrolled up. Let me... Oh, wrong statement. Elon Musk himself retweeted the video last night that he was against EV subsidies before Trump was president. Yeah. 100%. 100%. We've gone over that, so... It is what it is. That wasn't the statement that I wanted to read. Wouldn't tax cut help those Indians save more in U.S.? The 5% remittance would be mitigated? Technically, yeah, if they work in a sector where they would get their taxes cut, or if they got tips, then there'd be zero taxes on tips. So theoretically, they would make more money than they would lose in the remittance tax, right? Well, we'll see. PD10, everyone. We'll see how this goes. I'll catch you on the next one, yeah? Take care. Goodbye.